इससे बड़ा लेसन जिंदगी में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। और you are far above the edge everywhere, because you always take initiative, you always helping out people. And ये आपको बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि how in 8 years I could reach a level of a president of a company. I think 99.9% is all because I was an army officer. मेरा जो इंस्ट्रक्टर होता था वो भी जाड़ था, वो गालियां देता था खूब। ओके, एंड every time he'll refer to aircraft, he says, तू ट्रैक्टर चलाया? मैं यहाँ जी चलाया। He said, ट्रैक्टर समझ के चलाओ। I was scared. I little nervous, and he cleared me. He says, "Okay, you can go for solo." So I looked at him. He could see from my face कि भाई सर मैं जाऊँ, मतलब भैया आप अपने जो भी है, जैसे फीलिंग आती है कि अपने लाडले को भेज रहे हो, मैं वापस भी आ सकता हूँ। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट Colonel Rupinder sir. He is an alumnus of the Officers Training Academy, and he was commissioned in artillery. Then he went to aviation, and he is an aviator. So we will get to know about the psyche of an aviator and how you can become an aviator just like sir. And sir is currently settled abroad. And यहाँ पे भी 8 बज रहे, लेकिन सर के वहाँ पे मॉर्निंग। सो सर, गुड मॉर्निंग टू यू सर। नहीं, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद, वंदे मातरम। इट्स ऑलवेज प्लेजर कि अपने जो कंट्री के लोग हैं उनसे आप बात करो, आप शेयर करो एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ प्लेजर। दिस सैटरडे मॉर्निंग ऑफ माइन, हमारे यहाँ सुबह 8:30 बजे हैं। दैट्स व्हाई यू सी ऑल दिस सन ब्राइट, राइट? वी आर स्टिल, सो वी जस्ट गेटिंग अप टू एंजॉय द वीकेंड। So sir, what was your background like and कहाँ से आपको मिला motivation to join the OTA? See, I think this is the time जब आप रिटायर हो जाते हो, आप and you're settled and that to abroad, आप बहुत सारे सच बोल सकते हो जो शायद आज तक हमने बोले नहीं। Okay. देखो, थिंग इज कि रियलिटी ये थी कि जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग कॉलेज में गए तो पंजाब में इट वाज पीक ऑफ मिलिटेंसी। ओके, Yes. 1984 में जो ईयर बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, उस टाइम मैं कॉलेज में गया। मतलब माहौल ऐसा था पंजाब में कि आपको ये लगता था कि जा तो आपको कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट जो है वो मार देंगे या पुलिस मार देगी आपको। ओके, सो बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ जट सिख बैक इन द विलेज, ये हालात थे यार। मैं था भी बॉर्डर एरिया से, सो वहाँ पे जो सिचुएशन थी बहुत खराब होती थी। एंड वहाँ पे नजर आता था कि भाई हाउ you literally used to see terrorists or militants, whatever you call them, with guns and automatic weapons, and encounters हो रहे हैं, गोलियों की आवाज आ रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि भाई आप पढ़ नहीं सकते, लाइट्स बंद कर दो, so many things were there. So we drove, हर टाइम यही होता था। There was a continuous fear, okay, of losing life. So like I think जिनमें जो लोग भी फौज में जाते हैं, they have some element different in them. एक चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जज्बा जरूर होता है कि डर उतना नहीं होता। डर हर इंसान के अंदर होता है, उतना नहीं होता जितना कि हर आदमी दूसरा डरता है।
So I think there's one fine day, मुझे भी नहीं पता कब, कि जब ये मन में आया कि नहीं यार बहुत हो गया, you know, I was always into this कि यार violence जो है और जहाँ कानून अपने हाथ में लेना is not something which is right. So मैंने यूनिफॉर्म पहनी है and this has to stop. Punjab cannot be like this. Okay. तो आई कैनॉट रिकलेक्ट कि कब वो चीज आई दिमाग में, पर ऐसा यार ओके मरना है तो भाई मरना ही है, डजेंट मैटर। ठीक है, तब ये होता था कि यहाँ तक हालत है कि जो जिनके पुलिस में थे, जो आर्मी में थे, बिकॉज उनको भी टारगेट किया जाता था। एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर एंड उनके ऊपर भी मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने अटैक किया, बट ही सर्वाइव्ड, ही वाज फिट इनफ टू रन अवे। वो बचा, अपना उन्होंने बचाव कर लिया। So I took it as a challenge. I said, yeah, बहुत, that's enough is enough. Okay, and मैंने जो भी है, I will be joining army. Okay, I will have to wear uniform and I'm going to fight any anti-national elements. Doesn't matter पंजाब हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हम पढ़ते थे. So that was a turning point. And then we worked for that कि भाई you start becoming more serious. आपका ये कोशिश होती है कि भाई आप you study well, you do well. That made me do very well, and I had honors and I role of honor भी I became, I was a topper. So that's how the journey started. Physically up थे because my dad was he represented Punjab for football, so I was into sports. I was in field hockey. I was a sprinter. तो ये भी होता था कि यार फौज में फिट होना है, सो you start working out more into that कि let's join army. When you said the question भाई why OTA, math was my strongest subject and सबको पता है कि जो CDS में people, if math is the one subject which is different between IMA and OTA. So I cleared both exams, and if I recollect correctly, I was 72nd in the merit. So I was like, I could have IMA or and जो OTA था, both I ticked. But फिर वही चीज होती है कि I was the first one to join army I thought of joining army in my family because everybody was either या तो educationist थे, जहाँ वो politics में interest रखते थे, जहाँ फिर वो पुलिस में थे. Nobody has ever seen anybody going to army, and somehow maybe everybody around me they thought कि भाई ये ना जोश में आके ये फौज में जा रहा है, ठीक है, because I used to talk at home कि यार this is nonsense. मैं ये एंटी जो चीजें हैं ये डर डर के तब लोग गांव छोड़ के शहरों में जा रहे थे कि because safety was a question. So I told my parents, firstly, God bless them, they're no more, but see, there was a big stand. जब मैंने stand लिया कि नहीं यार हमने तो we are not going to leave our village. जब मरेंगे तो यहीं मरेंगे, doesn't matter. So we going to stay. जबकि हमारी आसपास की जो families थी after my grandfather के ऊपर जब attack हुआ, so they all left and they settled in cities. So I said नहीं, face up front. जो होगा लेट्स सी, चाहे वो पुलिस है चाहे वो टेररिस्ट है, डजंट मैटर. सो दे स्टूड बाय माय डिसीजन, बट उनको ये भी था एज अ पेरेंट, उनको लगता था यार ये जोश है टीनेज का, एंड ही जस्ट वांट्स टू डू दिस. पता नहीं कितनी देर तुम फतूर, वो यही बोलते थे कि तेरे काका फतूर चढ़िया, यूनिफॉर्म पहनी है. डजंट मैटर, फतूर इज फतूर. एवरीबडी I think who joins and goes for is willing to go and get killed for his country or kill somebody for his country. उसके अंदर जुनून तो होता ही है ना, ठीक है. He's not a normal person. Simple. We are all abnormal. That's what I call. We are abnormal as per everybody else outside defense forces is concerned. तो बस यही जोश होता था कि यार वो कहते हैं यार देखो तुमने हमारी सुननी तो है नहीं, because I was hell bent on this. जैसा बेटा फिर तू ऐसे कर, तो 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है. सो आई थिंक दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन. मैं क्या, चलो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि मैंने तो परमानेंट लेना ही लेना है. चलो भाई तब तक उनको भी दे विल गेट यूज्ड टू माय थिंग्स. एंड आई थिंक थैंक गॉड तब सोशल मीडिया नहीं होता था. चाहे हम किसी इनकाउंटर में होते थे या कुछ भी हो रहा होता था, सो उनको पता ही नहीं चलता था. जब भी फोन करते थे 4-5 दिन बाद उनको पता चलता था वहां पे जी ये हुआ बेटा, खबर पड़ी है, नहीं ये साढ़े नहीं हैगी, वो किसी होर दी है. सो वी यूज्ड टू
live that life ke bhai telling them nahi nahi wo that was somebody else, right? Yes, sir. Yes, sir. So I think that is how I went to OTA, just to give regards to my parents. ऐसे कि भाई तुम 5 साल के जा, you know, go and see कि भाई आमी कैसी है. You never been, nobody has ever been. I says ठीक है जी. So that's how I ended up choosing OTA, with very clear in my mind कि यार रहना तो permanent ही है, but that's okay, right? So this is Right. how the journey to OTA started, and I think that was one of the best decisions. I have reasons for that, but I think मैं सही choice करी. Yes, sir. So, sir, you had said earlier कि you were very good in athletics and football. Natural instinct भी था. So, was life in academy little bit easier? Like I was in academy team golf and shooting. So things were quite easier for me. Like I was sometimes excused morning ODTs and many extra things which comes with the tag of academy team. So, how was your time in OTA? How was your training? And what all things what are the in concise, so what are the 3 lessons which you learned in OTA which kept you lifelong strong, sir? सबसे पहले तो the first lesson was have no expectations. Okay, I have a funny reason why I learned this lesson. I felt कि यार expectation least रखनी चाहिए, ठीक है, right? That was my first lesson which I learned very early days in academy. दूसरा, you know, I will say, you know, I wish I would have been told कि यार golf खेलो, shooting करो, you know, you will be excused. ऐसे नहीं था. So we went into things which were tougher. And Yes, being sir. in field hockey and sprinter and all, सारा pressure ही हमारे पे आता था. Company commander will put more pressure on us कि भाई ये game खेलनी है, championship आनी चाहिए, you bloody well do this. So हम ना वो bloody well से ही शुरू होते थे, ठीक है. तो हमारे लिए वो it was not something कि excuse होता था. In fact, जो अच्छी hockey field होती थी, you know, because I was actually a fullback and I was very good in conversion of penalty strokes and penalty corners. तो मेरे पे ये प्रेशर होता था, कहते हैं यार देखो जूनियर के ऊपर जैसे प्रेशर होता है, कहते हैं यार ये वाली फील्ड जो है ना, ये हमारे हम प्रैक्टिस करेंगे. तो Yes. रात को उधर से डीएस का खतरा, उधर से तुम ना हॉकी के पैड लेके तो गोल में जाके सोते थे, you know, दो, ठीक है, कभी. एंड अक्सर बिकॉज अगर यू आर फुल बैक एंड यू वांट अ गुड गोल एंड यू वांट अ गुड डी अराउंड यू, तो तुम्हें ये होता था कि यार पता नहीं ये ग्राउंड नहीं मिली तो मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ये थोड़ी अनडुलेटेड ग्राउंड हुई तो बॉल नहीं प्रॉपर, यू नो, स्कूप होगी. तो हम लोग आधा टाइम वीकेंड पे प्रैक्टिस के लिए भी रात को उठ के सोते थे, यू नो, गोल में जाके. तो आई थिंक दैट वाज एक्स्ट्रा पनिशमेंट if I look at from that point of view, but it was fun. I think it was very good because अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, I think you get more exposure. You definitely are more liked. You're known Yes. more into your you know, instructors and everybody. So it helped me everywhere. You know, चाहे आप रेजिमेंट में आते हो, if you are good physically, I think it's always a big boon, right? And the second lesson which I learned was be truthful. Yes. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें बंदा सीखता है हार्ड वे, ठीक है. कहीं ना कहीं पे यू नो शुरू में पकड़ा जाता है, तो बंदा यार इससे बेटर है कि जो भी है, यू नो, बक दो rather than कि हाइडिंग है, क्योंकि हाउ यू कैन बी गेटिंग इनटू ट्रबल by just not being truthful. That was, I think, lesson was camaraderie. Okay, I feel that इससे बड़ा लेसन जो है डिफेंस फोर्सेस में ही जाने से मिलता है. यू कैन नेवर बी, मैं कॉर्पोरेट में हूं, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी. लेट मी टेल यू, ऑल दिस वी डू ऑल दिस टीम बिल्डिंग एफर्ट्स एंड ऑल दिस स्टफ इन सिविल, ये सारा ऑफशूट जो है वहीं से आया. बट स्टिल आई विल से कि भाई out of 10 not even you achieve 2% of it, you know, I'll scale 2 out of 10 in a corporate world. मैं जितना मर्जी उसमें डाल दूं, टीम एफर्ट्स एंड दिस दैट, जो दिल से कॉमरेडरी जो है फौज में और डिफेंस फोर्सेस से आती है, वो दुनिया की चाहे कोई फौज हो. यू नो, आई हैव सीन, इवन इन आई इंटरेक्ट अ लॉट विद कैनेडियन आर्मी एज वेल. ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिफॉर्म पहनने से आती है, और वो भी डिफेंस फोर्सेस में, कि वेयर यू आर सेल्फलेसली हेल्पिंग योर कॉमरेड, यू आर सो
इमोशनली अटैच टू योर, चाहे तुम्हारा वो जवान है, चाहे तुम्हारा वो जेसीओ है, तुम्हारा साथी है, you there is no jealousy factor. I didn't see कि भाई in 21 and a half years कि ये factor कभी आया. You are always boosting somebody else. You always helping out somebody else. I think इससे बड़ा लेसन जिंदगी में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता. और you are far above the edge everywhere because you always take initiative. You always helping out people. And ये आपको बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि how in 8 years I could reach a level of a president of a company. I think 99.9% is all because I was an army officer and I had those traits which I never valued. You know, subconsciously आप इतने लेसन सीख लेते हो, पर आप जब बाहर आते हो तो लोगों को पता लगता है कि यार ये डिफरेंट है. चाहे आप ड्रेसअप होते हो, चाहे आप मीटिंग में जाते हो, चाहे आप किसी के साथ मिलते हो, चाहे आप आपका कंडक्ट हो, चाहे आप कंपनी के लिए लॉयल्टी दिखाओ. Right? I still remember, when you're talking about the lesson, that I was approached by recruiters, and you know how corporate world works. So then they said, okay, tell us how much you get the salary, annual salary. I gave them a figure. I said, okay, this is okay. There's a company which is interested in you. We can get you $10,000 extra annual, and this will be extra. This will be extra, right? And I very openly say that I walked up to my company CEO and I said, okay, this is somebody's approached me, and I don't even know how they came to know. In fact, मुझे तो पता भी नहीं था. They guided me कि भाई आपके LinkedIn में कहीं आपने टिक किया होगा ready, open for hire, तो इसलिए वो आपको कर रहे हैं. So the first thing I did is कि मैंने उसको ब्लॉक किया कि भाई मुझे कोई बाहर से बंदा मुझे अप्रोच ना करे कि यार मैं भाई तुम्हें लालच देना की कोशिश करे. And my first question was, no, that's not. This is a company which gave me a break as an immigrant. My loyalty stays here. It doesn't matter. Yes. Okay, though my company was good enough to say, okay, don't worry, we'll match it. Okay, you deserve it. So I got a rise, but that's what I learned. Okay, I think मेरी जगह कोई और होता तो शायद अपना 2 week का नोटिस देता चला जाता. I think that camaraderie, that loyalty and the factors which gives you, yeah, this is my regiment, and you have to do, die, everything is here, is my home, outside the home. These are the top 3 lessons I've learned, and I think great, as strong as my backbone. It's been always there and helped me a lot. Amazing, sir. So how was that moment when you got passed, commissioned? I think this is 92. Yeah, March yes, 7th, March 92. 92. And so 6 months back, only like 91 December, my father got commissioned. So he was also commissioned in RT. So how was your experience commissioning when your parents would have visited? Because lots of aspirants watch my channel, so they must be interested to hear, sir. Because I never had sleepless nights in my life. I've actually known कि मैं पिलो पे सिर लगता है तो मैं सो जाता हूँ. Okay, that's how sound sleep I get. I think passing out से I don't recollect कितने दिन पहले. I can very openly say कि मुझे तो एटलीस्ट नींद नहीं आई, because क्या होता था कि जब हमें वो यूनिफॉर्म मिल गई, हमें वो स्टार लगवा दिया ऊपर द कवर, and it was told कि भाई रात को भाई DS become more strict, अभी ये पास आउट होने वाले हैं, अभी ये गलती करेंगे तो they are always on a like a High alert, hovering around high alert पे होते हैं. पर हम रात को छोटी सी टॉर्च लेके उसको मफल करके वो स्टार देखते थे उठ के कि यार कैसा लगता है. एंड अभी तो 2 मिलते हैं, एटलीस्ट देयर इज समथिंग ऑन द शोल्डर. तब एक ही मिलता था, एंड दैट वन स्टार हैड दैट मच वैल्यू. तो आपकी रातों की नींद जो थी ना उसने उड़ा दी इन अ पॉजिटिव वे, राइट. एंड ऑल वी वर डूइंग इज के अपने रूममेट से बातें कर रहे हैं कि यार ओके यहाँ जाएंगे, ये करेंगे. तब तक आपको हमारे टाइम तो आर्टिलरी, लाइक योर डैड नोज, we only used to get a regiment of artillery. We never got our regiments. So those talks, and plus I have no hesitation in saying this कि यार मैं शायद बहुत कम लाइफ में I would have cried, but I definitely cried hugging my roommate and my buddies कि यार who knows if कि भाई तब ऑपरा क्रम जो चल रहा था,
Sri Lanka mein, we were hearing Pawan. Yes. Op Pawan was on, and Sri Lanka mein jaake, our drill square was Major Parmeshwaram, who was the first Paramveer Chakra of OTA, and he Yes. sacrificed his life in Sri Lanka. So, all those things were going on. Ki yaar, who knows, kab koi saathi chhoot jaye, that type of a feeling. So, I think we were nostalgic. We were very happy. I definitely recollect sleepless night aati thi khushi se, all you were thinking, yaar, कि भाई, and you're waiting for. अंतिम पल Yes. कब निकलूं? Yeah, it's. I think that जो आखिरी पथ वाला feeling है, that's Yes. very heavy, both emotionally, nostalgically, and you have dreamt for that कि यार जब से आप यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो या स्कूल में हो, you've been thinking यार मैंने वो star, I have to earn that star, and when it's so close and so far, ठीक है, that mixed feelings कि भाई कब आएगी सेवंथ और कब निकलेंगे, and कब we'll meet our parents, and कब parents will be pipping you. I think that was something, and to earn that salute कि यार कब कोई salute मारेगा, right? Okay, so that is a real nostalgic feeling I had. It was, I think, with everybody, but for sure it was very special for me because I had thought of it since 84 or 85. मेरे लिए वो नहीं था कि मैंने जॉब करनी है. It was for a passion. It was for a mission कि नहीं यार मैंने ये करना. And I was actually very eager कि यार मेरी जो भी regiment हो वो पंजाब में हो. भाई मैंने वहाँ जाके I have to stop this. That's the type of feeling. It was great. Right? So, sir, did you get a chance to go for Operation Rakshak in Punjab? Yes, my that's what my regiment was in, and I cannot divulge more details, but yes, I did get opportunity to be there, and I think that was the best thing. And very quickly then I had get an opportunity to be in Op Rhino, which was going on in Assam. Yes. In initial years, you when you get to do things which you wanted, and जिसके लिए तुम फौज में गए थे, it's very satisfying, and that's, I think, build my momentum for doing well in army, and continuing being on the same spree. वो बहुत important होता है कि आपका रेजिमेंट का शुरू में एक्सपोजर किस टाइप का मिलता है. So I think operational exposure is one of the best exposures which one can get. It's risky, but I think that's what you meant to be in. True. So, sir, how was this? How did this transition from a gunner to aviator took place? I know जितने लोग पंजाबी समझते हैं, I think they'll understand it, my statement very clearly. कि भाई लोग पूछते हैं मेरे से बड़ी बार कि भाई what was the motivation? I was a rash driver. Okay, right? Okay, and a couple of my regiment guys were into those motorcycle formations, which you see. Yes, sir. Signals वाले मशहूर हैं वैसे, पर हमारे बंदे भी 2-3 थे, वो पार्टिसिपेट करते थे हमेशा, बाइक पे. तो हमने ना उनसे चोरी अगेंस्ट आवर सीओज विशेस हमने सीखा कि यार ओके बाइक पे खड़े हो जाओ, उस पे लेटो, उस पीछे को मुंह करो, all the stunts, and we didn't have the luxury of buying cars. So we had either Enfield or उस time Yamaha RX 350s होते थे, which had a good pickup speed, and so either of them we were driving. So whenever I was driving, I used to drive home. So I'll on a village road from city खाली होती है, so I'll do all these stunts, okay, and drive it very rash, and बहुत. So मेरे डैड को ना बड़ी शिकायतें आती थी. Okay, right? So every time they say तेरा मुंडा, he was doing this, or जी इतना तेज भजाऊंगा, all those things where people come. And one fine day, I think my dad, even I was a young captain, my dad got fed up with those complaints. He called me, he made me sit. He said, "एक पुत तू officer बन गया. एक पुत इधर क्या भाई, एक पुत मोटरसाइकिल में जहाज नहीं बन जाना. ये तो इतना ही शौक है ना तो जहाज चला." Okay, so this was my motivation and a turning point. कि भाई तू जहाज चला, something like to get rid of me.
So that's how I came back, and I said, yeah, find out. Because I was not lucky like having a father from army. So I had to figure out ourselves. कि यार, let's figure out कि यार pilot कैसे बनते हैं. हाँ? So then I figured out कि भाई, okay, there is something called army aviation भी होती है. ठीक है, तो then we figured out कि कैसे होता है, क्या करना चाहिए, and yeah, that's how the journey started. I think I was meant to be a pilot, and it was something which I had a great success in. So that's my reason. There's no other motivation but that father's statement. You know, so वो sometimes those things strike you. कि अच्छा हाँ स्पीड नहीं छोड़नी but जहाज पकड़ लेते हैं. Sir, how was your first solo sortie experience when you went alone, no instructor, and your first sortie? How was that experience? Truthfully, मैं it's not about being a bias or something. मेरा instructor he was a Jat. Okay, and being a Jat and a Jat combination was deadly, right? Okay. So मैं जब भी and सबको पता है कि एविएशन में ना इंस्ट्रक्टर जो है आपको मुक्कियां मक्की में मार देते हैं. ठीक है, कई बार नाक पे पड़ती है ऐसे करके, यू हैव अ मास्क ऑन, यू भाई अलग अलग इंस्ट्रक्टर के नाम होते थे. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ स्क्वाड लीडर डांगी, बिकॉज़ हमारे टाइम थे एयरफोर्स में जाते थे, एयरफोर्स एकेडमी में. वी आर दोज लकी पीपल हु एक्चुअली पास्ड आउट फ्रॉम बोथ एकेडमीज. We went to Oh, Air great. Force Academy in Dundigal. Then we went to HTS, Helicopter Training School in Hakimpet, Nashik. the Air Force Okay. cadet. And last 6 months used to be in School of Artillery in Devlali. So we 1 year we spent with the Air Force, and our colleagues were all Air Force cadets, okay, or naval cadets. तो ऐसे नाम होते थे. आई स्टिल रिमेंबर हमारा इंस्ट्रक्टर होता था स्क्वाड लीडर डांगी, दूसरा था डॉक्टर डैंग. एक पुरानी मूवी थी जिसमें अनुपम खेर वाज अ विलन एंड डॉक्टर डैंग वो मुक्कियां मारता था. मेरा स्क्वाड जो इंस्ट्रक्टर होता था वो भी जाट था, वो गालियां देता था खूब. ओके, एंड एवरी टाइम विल रेफर टू एयरक्राफ्ट, ही सेड तू ट्रैक्टर चलाया? मैं हाँ जी चलाया. ही सेड ट्रैक्टर समझ के चलाओ. तो ही विल गिव मी दैट टाइप ऑफ जाट के जो एग्जांपल्स भी ऐसी होती है ना, क्रूड. Yes, sir. I was equally crude, so I will understand it well कि हाँ यार कि भाई डरना क्यों है. वो कहता बिकॉज छोटे होते ही तुम्हारे बाप बुजुर्ग जो होते हैं बड़े खेतों में जाते हैं ट्रैक्टर पे चला देते हैं, लो जी, तो पैर तुम्हारे ब्रेकों पे नहीं लगते पर स्टीयरिंग पकड़ा होता है, एंड यू जस्ट ड्राइव अ ट्रैक्टर विदाउट लाइसेंस. मे बी यू आर 4 years old or 5 years old. So it's a big machine. So I was scared. I little nervous, and he cleared me. He says, "Okay, you can go for solo." So I looked at him. He could see from my face कि भाई सर मैं जाऊँ. पता भाई आप अपने जो भी है जैसे फीलिंग आती है कि अपने लाडले को भेज रहे हो, मैं वापस भी आ सकता हूँ. He looked at me. He opened the hood because we were going in HPD 32, which was a fixed wing in Air Force Academy. He looked at me and he says, ऐसे किया उसने. मैं ऐसा ट्रैक्टर, हाँ वो ऐसे किया है उसने, तो मुझे याद आ गया उसको हर बार ऐसे बोलता था. चलाया तो मैं ही डिड दिस. मैं सर हाँ सर ठीक है. तो so that is how it was. I said okay, it was a great feeling, and suddenly ऊपर जाके आपको you start actually getting jitters. Suddenly you realize यार तुम्हारे साथ है ही कोई नहीं, खाली सीट है, right? दोनों चीजें आती हैं कि भाई यार भाई what if. But then you say, yeah, okay, no worry, I'll handle it. You counsel, and it was fun. There's nothing great feeling when you do come and do the roller landing and you touch down, and your instructor is waiting there, your other co-pilots are waiting, those people who are those are training. So it's like a hero's welcome. जैसे रेड कारपेट पे कहीं फेस्टिवल में स्वागत होता है, फीलिंग वैसी आती है कि भाई हाँ भाई हम पायलट बन गए, सोलो हो गई है. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. Sir, often social media पर we see many pictures, जैसे किसी ने रेलवे ट्रैक पे लैंड कराया हुआ है या सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी सॉर्टीज कर रहे हैं, मल्टीपल सॉर्टीज. सो व्हाट इज डिफरेंट इन आवर ट्रेनिंग कि हमारे पायलट्स इतने मतलब टफ टेरेन्स में दे आर एबल टू सर्व, एंड दैट टू विद सच
frequency they are able to do their sorties. What makes them different, army aviators? आई थिंक मैं ये सिर्फ आर्मी एविएटर को नहीं क्रेडिट देना चाहता है, इंडियन आर्मी को देना चाहता हूँ, डिफेंस फोर्सेस को देना चाहता हूँ। Yes. कहीं पे भी है ना, जो चाहे आप कैमरन पेट्रोल देख लो, कहीं वी आई थिंक हमारी जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत मेंटल हार्डनेस के ऊपर है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ओके, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबॉडी, बट आई हैड एन एक्सपोजर विद द यूएस आर्मी आल्सो यहाँ पे, एंड आई एम हियर मेंबर विद द एयर लीग ऑफ कनाडा, वेयर एयर कैडेट्स, जो जैसे वहाँ पे हमारा एयर एनसीसी है, आई एम मेंबर विद दैट। मैं इनको देखता हूँ, यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं होती बड़ी जल्दी, यहाँ पे फेल हो रही है तो यू नो इट्स वेरी कूल, इट्स नॉट दैट एकेडमी थिंग, ऐसे लगता है जैसे यू नो इट्स लाइक अ पिकनिक लिटरली एज पर आवर स्केल्स, Like college. या इट्स लाइक अ कॉलेज में ना, वी आर सो मेंटली हार्ड, हम डरते ही नहीं है। ओके, to counter, let me say, I you know, because मेरे अपने ही बैच से we lost 6 pilots, God bless their soul। मुझे लगता है कहीं तो थोड़ा सा जरूर एलिमेंट होना चाहिए, मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, बट वी बिकम डेयर डेविल्स। ओके, बी इट एयरफोर्स, बी इट नेवल, बी आई थिंक जो पूरी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम मेंटली इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमें डर नहीं लगता। ओके, आई गिव यू लाइव एग्जांपल। एक बार वी वर डूइंग, बिकॉज़ वी वर फ्लाइंग फ्रेंच एयरक्राफ्ट, French, you know, they are French helicopters, Cheetahs and Chetaks when we started. Yes. उसकी जो कैटलॉग में सीलिंग लिखी हुई थी कि 19,000, ठीक है, 19,200 समथिंग, ठीक है, आई नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ। तो जो फ्रेंच पायलट्स आए, उनके टेस्ट पायलट थे वो, और उधर जो इंजीनियर्स थे उनके, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, वो when they came and I was in northern command, so we were supposed to go cross. We were supposed to touch almost a ceiling of 20,000. Yeah. So, and you know, the air becomes rare, the blades are sluggish, controls are sluggish, and you don't carry much fuel. You literally, fuel low होता है। तो यहाँ तक के 60 लीटर्स पे वो वार्निंग आ जाती थी, लो फ्यूल की। एंड हम ना लो फ्यूल की हमें पता था कि 1-2 मिनट फ्लाइंग के बाद लो फ्यूल की वार्निंग आ जाएगी, हम उसके साथ ही उड़ते थे। When you are not supposed to, you know, this is actual practical thing, because हमें लगता है यार पेलोड ही कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे कैसे, मतलब तो फिर तो आप फ्यूल ले गए इतना, तो एयरक्राफ्ट के अंदर और कोई चीज नहीं जाएगी, कोई आपने एमिनेशन ड्रॉप करना है, कोई आपने कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करनी है, तो करोगे कैसे? वो उतर गए। जब हमने ब्रीफिंग करी, वो कहते नहीं, हमने नहीं आना, ये तुम पागल हो, ठीक है, दिस इज व्हाट लिटरली दे सेड इन फ्रेंच टू वन ऑफ देयर इंटरप्रेटर, यार आर दे गाइस मैड? जो हाईएस्ट लिखी हुई है बुक में ना, हम उसके 20% नीचे जाते हैं, तो भाई क्वेश्चन है वो, दिस इज नॉट, यू नॉट सपोज्ड टू गो बियॉन्ड दैट। आर दे गाइस मैड? दिस वाज देयर रिएक्शन। भाई जिन्होंने जहाज बनाया है ना, वो कहते हैं पागल है, ठीक है। सो आई थिंक व्हाट यू सेड कि भाई इतना मिशन ओरिएंटेशन होती है कि यार चाहे उसके लिए आधे स्किड पे आप लगो, ठीक है, आपका यही चीज होती है। वी डन इट इनफ टाइम्स, एंड एम यही होता है कि यार हमारे बंदे बचने चाहिए। you know, that's जो चाहे किसी में भी है, you know, generally we take these risk in rescue missions, चाहे वो सिविल में हो, चाहे अपने जवानों के लिए हो, तो एक ही जज्बा होता है कि यार नहीं, मैंने बंदे को बचाना है। ओके, दो द ट्रेनिंग सेज कि ओके डोंट रिस्क योर लाइफ, बट आई थिंक एवरी सिंगल एविएटर would have risked his life enough times, and I think I was lucky, I was blessed कि हम बच गए। But if I recollect back, I think you know, anything could have happened, and it's including me, right? So that's the thing. It's that mental hardness जो डर ही नहीं लगता। I don't think so कि डर word ही exist करता है। You know, see, उधर encounter हो रहा है। Okay, आप सिविल में अगर किसी को बताओगे यार उधर encounter हो रहा है, and उस टाइम तो फॉरेन मिशनरीज आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस टाइम्स, राइट, व्हेन आई वाज देयर इन वैली, इट वाज 2003, 2004, 2005। ओके, वेल मिशनरी सारे थे, सुदानी, अनदर हार्डकोर मिलिटेंट्स, जो टेररिस्ट, और कॉम्बैट ड्रेस में होते थे। इमेजिन, नीचे इनकाउंटर चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा ऊपर से कि यार वो सिपाही है या वो टेररिस्ट है। ओके, देयर इज नो लैंडिंग ग्राउंड। ओके, बंदा आपका इनकाउंटर में, नाले में कोई कहीं इनकाउंटर चल रहा है, कोई जंगल में इनकाउंटर चल रहा है, ऑल यूज्ड टू गेट यार ये
ग्रेट रेफरेंस है, वहां पे एक बंदे की कैजुअलिटी हुई है, वो नाले में ले आएंगे, गोलियां चल रही हैं, आपको साउंड से पता ही नहीं चल रहा गोली आ किधर से रही है, ओके, एंड यू आर flying, taking off from a peaceful place that even if it is northern command, you're going from a base into firing without knowing कि यार उठाना किसको है, ओके, वो टेररिस्ट आपको गोली मारेगा, आपका कोई आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, आपके कोई बुलेट प्रूफ एयरक्राफ्ट नहीं है, इट्स पर्सपेक्स ग्लास, ठीक है, कब गोली किधर से आए, क्रॉस फायर से आए, जस्ट इमेजिन इफ यू टेल समबडी, बंदा ये कहेगा तुम पागल थे, right? And I think we Yes. are all pagal in some form, and I think pagalpanti is, like people Yes, watch sir. like Heropanti and Pagalpanti and all this film banti hai. I think the real Pagalpanti and Heropanti jo agar dekhni hai, so that's in defense forces, right? Yes, sir. True. So I think that's the reason why we do that. कोई कहीं land कर रहा है, it's not for fun, it's for other people. So, sir, moving on now from aviation, now you've come back and you have to pick up your command. So, how was your command experience, sir? And how was all that about? Some of the best thing is, देखो, I got an opportunity. I was lucky, and I must tell everybody who's aspirant, या जब भी जाओ आप, चाहे रेजिमेंट में जाओ आप, चाहे वायोस करो आप, कोई भी कोर्स करते हो, जो चीज थी कि वी नीड कि भाई मेरे अंदर कि नहीं यार, यू हैव टू डू वेल, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, दैट ज़ील एंड मोमेंटम शुड कंटिन्यू, एंड आई फील वेरी प्राउड कि चाहे वो कोई वेपन कोर्स पे जाओ, वहां पे भी ये होता था कि नहीं यार ये एक्सआई लेके आनी है, आपने अगर एविएशन में गए तो मेरा वही सिस्टम होता था, मैं देखता था जाके कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी ट्रॉफियां होती हैं, आप बोर्ड पढ़ते रहते हो, ऑनर रोल्स, एंड आई से ओके, बेस्ट पायलट, बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स, ओके, बेस्ट ओवरऑल, ऐसे लगे होते हैं ब्रीफिंग रूम में हर जगह, तो मैं यूज्ड टू सेट ऑन दैट, ओके, सो आई फील वेरी प्राउड, आज भी चाहे मैं और कुछ इंडिया से लेके नहीं आया, तो मेरी ये सारी ट्रॉफियां मेरे साथ आई हैं, सो आई फील वेरी प्राउड कि भाई आई वाज द बेस्ट पायलट, आई वाज बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स, एंड आई वाज बेस्ट ओवरऑल पायलट ऑल्सो, सो जितनी भी पॉसिबल ट्रॉफियां थी, ठीक है, वो मैंने जीती, एंड बड़ा अच्छा लगता है कहीं पे भी आप जो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड जाता है, कहीं पे भी जाता है, so it goes as okay that he was, your CEOs भी highlight करते हैं, you get more respect, and I feel that उसकी वजह से I got, though I was not permanent aviation, I didn't opt for permanent aviation cadre because I always wanted to command my regiment, तो मुझे I had the opportunity to command even a flight, so as a lieutenant colonel also, I got to command a flight, तो वो मेरा पहला एक्चुअली कमांड एक्सपीरियंस था, विच गेव मी अ गुड एक्सपोजर कि हाउ कमांड इज, एंड देन इन द फर्स्ट जो हमारा था प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड, सो आई गॉट प्रमोटेड इन दैट in 2007, so 2008 January I took over my regiment, so it was like from one command to another command. So the difference was कि वहाँ पे operations were aviation operations, यहाँ पे artillery related जो थे operations थे, so it was a great experience to command your regiment and to men जिन्होंने देखा है आपको as their seniors and those things, and I must share, I'm sure your dad will tell you the same thing, and के जवान और जो JCOs है ना, वो इतने समझदार हैं रेजिमेंट्स के अंदर कि मुझे जब मैं सीओ बना, ठीक है, तो इन आवर रेजिमेंट रेजिंग डे एक हमारा सूबेदार होता था, वो आया, ठीक है, उसने 93 में, ठीक है, दूसरे दो लोगों को ये बोला था, एंड दे वर विटनेस टू दैट कि साहब ने ये बोला था, एंड वो बहुत पहले रिटायर हो गया था जब मैं आई वाज जस्ट अ मेजर, कि ये साहब सीओ बनेगा. Yes, you are a couple of youngsters in the regiment. वो आपके अंदर ना, उन्होंने इतने कमांड देखी होती है, उन्होंने ऑफिसर्स देखे होते हैं, वो तुम्हारा सिलेक्शन बोर्ड सीनियर ऑफिसर्स नहीं करते, ठीक है, कि भाई पूल ऑफ मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल विल हेड कि भाई आपको जी फुल कर्नल बनाना है, आपको कर्नल बनाना है, आपको सीओ कमांड मिलनी है नहीं मिलनी. आपके जवान जेसीओ जो है ना, आपका सिलेक्शन बोर्ड जो है ना, वो आपके रेजिमेंट में जाते ही कर देते,
So this is what I want to tell people कि भाई don't, ये कभी भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए. और मैं हमेशा ही अपने यंगस्टर्स को भी एग्जांपल देता था, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समबडी, बी जेन्युइन. ओके, डिफेंस फोर्सेस इज द वन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इट्स नॉट लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि आपको किसी को गुड मॉर्निंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है. यू बी जेन्युइन, योर मेन एंड योर जेसीओज, दे आर योर बेस्ट जज. वो आपको आपका एसएसबी ना वो बहुत पहले कर देते हैं. ओके, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक. क्योंकि वो आपको इतना क्लोजली वॉच करते हैं कि दे आर नॉट योर सीईओज कि भाई आप. सो दिस इज माय टिप व्हिच आई वांट टू गेट कि जो भी एस्पिरेंट है, चाहे अपने सिलेक्शन बोर्ड में जाना है, सर्विस सिलेक्शन एसएसबी में जाना है, बी ट्रूथफुल, बी जेन्युइन. आप फेक नहीं कर सकते. आप अगर सोचोगे यार मैं वहां पे प्रेजेंट कुछ करूंगा, आई थिंक इवन इफ यू एसएसबी में निकल भी जाओगे ना, ओके, बिकॉज जस्ट कपल ऑफ डेज एंड सम टेस्ट, आप यू मे बी एबल टू डू दैट, बट आप अपने जेसीओ जवानों को बेवकूफ नहीं बना सकते. वो आपको इतना क्लोजली देखते हैं और उनको आपकी सच्चाई पता होगी. आप जो एक्चुअल हो ना, वो आपका रेजिमेंट जो है वो उसका हर जवान और हर जेसीओ वो पहचानता है. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी व्हेन आई हर्ड दिस कि भाई आई वाज अप्रूव्ड so many years before I actually became a full colonel or a regiment CEO. एंड वही एक तुम्हारे लिए सेंस ऑफ प्राइड है कि यार तुम्हारे जिनको तुमने कमांड करना है, दे एक्चुअली फील दैट यू आर कमांडिंग देम. यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट कमांड रेजिमेंट. दैट्स व्हाट आई फील टुडे कि रेजिमेंट की कमांड कर, ठीक है, आप रिस्पेक्ट कमांड करते हो. रिस्पेक्ट का नाम 71 मीडियम हो सकता है, 10 सिख हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट दैट्स द रिस्पेक्ट. If you can't earn that respect, I think that's the command which you actually do, where they actually feel that hamara saab, right? That feeling is the greatest feeling which one can get. Right? So that's what was my experience. So moving on to your second innings, now you retired, and so how was that transition from military to corporate? And you have spoken about it a lot. And these days I see your ads are running on Instagram also, and you're motivating kids over there by conducting live sessions like these. So how was this transition? Transition was I took premature, and I was very clear in one aspect that I never wanted to send my kids abroad for studies alone. I always wanted to be, with them. And being a single father, I felt that okay, they need me more than anything else. So sometimes, then there's a thing when you say, okay, I did my best. I gave my youth to my country, and it's now, that also there's a responsibility for kids at home, right? And so I felt okay, that I had an opportunity to migrate. So I said, okay, let's migrate. So I came to Canada. It's one of the most peaceful and country where I think human value is the most. If you see, whereas human rights are concerned, right of speech is concerned. So it was the decision. So, but yes, transition, we took it as and मैं आपको like you child like you who's been seen in army, my both kids took it as another posting. Okay, right? उनको लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है जो एक ही स्कूल में होते हैं, उनको लगता है यार मेरे दोस्त छूट जाएंगे. It's become a big thing, right? We are so used to this यार हर 2 साल बाद Actually, so true, sir. So नई true. अडेप्टेबिलिटी होती है, नई भाषा होती है. like my kids starting from Binagudi to Nasik to Bangalore to Jalandhar to Leh, Nimmu, हर तरह का बंदा, हर तरह के बच्चे, हर तरह की डिफरेंट कल्चर के साथ अडेप्ट हुए. So it was just like ठीक है भाई नई पोस्टिंग है. So the mental transition was so smooth. Okay, and that's where I realized यार कि भाई hats off to our lifestyle in defense forces. यार कितनी adaptability दे देता है कि भाई आपको लगता ही नहीं कि आप नई जगह पे हो. ओके, आपको ये लगता ही नहीं मेंटली कि यार वो जी आप आगे वो नए लोग हैं, वो मेरे को जानता है. Feeling every station, right? You go I've through changed 12 schools, sir. 12 schools. Yeah, so that's From- what Yes, sir. 12 स्कूल. अभी आप देखो ऐसे ही माय किड्स डिड, तो उनको लगता था यार हमने आके फिर एस्टेब्लिश करना है.
And teachers don't know your history. आपको आके हर जगह नया फिर प्रूव करना पड़ता है. And I think there is nothing better than being a defense kids, because there is always a momentum. वो हर जगह आते हैं, हर जगह नए दोस्त बनाते हैं. They establish themselves. दोस्त लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, आप लोगों के पास जाते हैं. Yes, sir. True, sir. उसके एडवांटेज देखो कितने हैं. एंड मेरे पास कितने एडवांटेज थे. आई न्यू नोबडी, राइट. हर जगह जाके ऐसे लगता था कोई भी नहीं जानता, पर यही होता था कि यार जो फौज में सीखा कि यू टेक 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, यू नो, एक्सटेंड योर हैंड एंड से आई एम सो एंड सो. आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं मिलता है कहीं पे. लोग सेवन में खड़े रहते हैं बाहर कि भाई यार कोई हमें बुलाएगा, मुझे कोई जानता नहीं, एंड दे फील सो ऑड, यू नो, हम नई जगह आ गए. ये गाना हम, राइट, ओके, वी आर सो यूज्ड टू दिस के भाई, एंड यू कैरी मेमोरीज फ्रॉम अ ओल्ड स्टेशन. एंड नए स्टेशन में टेम्परेचर डिफरेंट है, घर का कंडीशन डिफरेंट है, आपका फर्नीचर नहीं एडजस्ट हो रहा. सी द, ये छोटी छोटी चीजें जो हम आर्मी में रह के कभी वैल्यू नहीं करी, ओके, ये इस ट्रांजिशन में मैंने वैल्यू करी है कि यार जब वहां पे पर्दे कभी छोटे कभी बड़े, कभी खिड़कियां बड़ी कभी छोटी, कभी बंगलो, कभी अपर स्टोरी, कभी छोटा घर, कभी बड़ा घर, यू नो, कभी डिफरेंट स्कूल, कभी वहां पे मोमोज मिल रहे हैं, कई जगह पे चिकन मिल रहा है, कई जगह पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं, राइट, कई जगह फील्ड एरिया है. तुम्हें यूज टू ही नहीं होते आप. आपको सब्जी मिल गया, आप सब्जी खा लेते हो. आपको कोई किस डिफरेंट कल्चर का आदमी मिल गया, आप डिफरेंट हो जाते हो. आपको कोई क्रिश्चियन मिल गया, आप वैसे बात करते हो, आप उसको क्रिसमस विश करते हो. हमें कभी प्रॉब्लम आई है ऐसी? वी आर नॉट No, यूज्ड sir. टू एनी कल्चर. वी आर True, नॉट sir. यूज्ड. True. यही, दिस इज व्हाट, ये किसी पैसे से आपको कोई दुनिया में नहीं खरीद दे सकता. लेट मी टेल यू, बेस्ट schools, I have been in Dehradun, I have been to Doon schools, I have been to, you know, St. Bishop's Cottage. कोई स्कूल आपको ये अडेप्टेबिलिटी ट्रेन कर ही नहीं सकता दुनिया में जो कि एक आर्मी एपीएस और केवी सिखा सकता है. बिल्कुल. और ये इतना बड़ा एडवांटेज है. लेट मी टेल यू, बोथ माय किड्स आर डूइंग वेरी वेल. माय एल्डर सन इज गोइंग टू द टॉप लॉ स्कूल ऑफ द कंट्री दिस ईयर, and he got high honors with distinction from the University of Toronto, which is the #1 university in the country. And he was the first brown guy to be captain of the university football team, जो कि American football है, which is very different than normal soccer. Yes. Okay, and he became their coach. I'm just saying this all कि ये सारी चीजें उन्होंने जो अचीव करी है, not only मैंने जो किया है, it is all because of फौज. Okay, they never had a hesitation कि यार हमें कुछ, उन्होंने कभी बोला ही नहीं डैड हमें कोई जानता नहीं, डैड नया स्कूल है, नई टीचर है, वो तो टीचर मुझे मेरा नाम भी नहीं जानती, आपने अपना नाम उसको याद कराना है हर बार. हाँ. नहीं, आपको आपकी कोई बात नहीं है, आपको बुला ही नहीं रहा. आप पहले दिन ऐसे घुसते हो क्लास में कि भाई एवरीबॉडी लुक्स एट यू लाइक एज इफ यू हैव कम एज एन एलियन, राइट. सो दे हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट. Yes, आप sir. किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो, आपको कोई जानता ही नहीं, राइट. यू हैव टू मेक योर आइडेंटिफिकेशन. सी हाउ मच एक्स्ट्रा आपकी वो आपकी मोमेंटम एक चलता रहता है, एंड यू नेवर गेट स्टैग्नेंट. आप कॉम्प्लीसेंट होते ही नहीं लाइफ में. जब आप कॉम्प्लीसेंट नहीं होते आपका, यू नो, सो देन यू ग्रो. Okay, that's why, that was the reason why I did well here also, which I never thought. कि भाई मुझे ये लगता था यार कि भाई मुझे कोई जानता नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करनी है. हर स्टेशन में करते थे. अब नई यूनिट में जाते हो, नई पोस्टिंग में जाते हो, आपको स्टाफ अपॉइंटमेंट मिल रही है, कहीं आप एडीसी हो, कहीं आप कुछ हो, हर जगह डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट आपकी यू नो एनवायरमेंट. कहीं पे ऑफिस वर्क है, कहीं पे टोटल फील्ड वर्क है. कितनी वैरायटी आपको डिफेंस फोर्सेस दे देती हैं. इसकी एक्चुअल आपको जो एज है ना दूसरों पे, वो आपको बाहर आके पता चलता है यार. Why you know to be, why when you look back and see here, what is the reason for my success? It's not hard work, it is those traits which I learned from uniform. Yeah, so this is my transition. It was actually just like a same कि भाई नई पोस्टिंग है, नया रोल है, that's it. यहाँ कोई जानता नहीं है, तो अपनी पहचान बनाओ, and the only way to make your पहचान is that you do well and you get established, right? So आप ज्यादा मेहनत करते हो, and there is no mental blocks. आप इस चीज के साथ सोचते ही नहीं कि भाई आप नए हो, because this is something which you started with when you went to the regiment. Nobody knew you. Yes, sir. Thank you very much, sir, for coming on our platform. And before going this question, I've asked all the veterans who have come on the show that what is your final message to the defense aspirants out there, because you're someone who has been
interacting a lot with them on Instagram, on YouTube. So, what's your final message? Because these days, people, especially aspirants, are more interested in the number of rifles or what caliber it is, or academy ke kisse. They're not interested in basic values like hard work, discipline, honesty. So, what is your final message to them? So, what would be your final message? मेरा फाइनल मैसेज हर एक को ये होता है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट फन, राइट? अगर कोई बंदा सोचेगा ओके यू नो इट्स नॉट लाइक अ वीडियो गेम, इट्स अ रियल गेम, इट्स अ रियल ब्लड, right? It can be yours, it can be enemies. So go when you want to be, you know, somebody wants to wear a uniform, it's you are choosing a way of life. It's not a job, it's not a shock, it's not adventure. Everything comes along with it. It's adventure, fun, and nobody have more fun than people in defense forces, that I can say. You know, no parties can match ever, you know, defense parties, and no adventure can match the real adventure of life. आप रियल एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, आप गेम में नहीं खेल रहे, वीडियो गेम्स नहीं है, ये रियल लाइफ है। आप रियल लाइफ में 5 फीट अबव द ग्राउंड पे जहाज उड़ा रहे हो, विच यू कांट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग। आप रियल बुलेट्स के साथ, रियल बुलेट घुसती है बॉडी में, आपकी हो या किसी की हो। सो ये सारी चीजें, इट हैज टू बी यू नो अ वेरी सेंसिबल डिसीजन, इट्स अ कमिटमेंट टू योर कंट्री। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखो, ये सोच के जाओ that you going to be married to army, right? It's a marriage, it's and which has no divorce, right? Yes, sir. You know, in a marriage you have an exit. When you, if you're committed for, you know, it will be commitment for life. मैं आज भी फौजी हूँ, my behavior, मेरी, चाहे मैं कभी भी सिविलियन नहीं बना और ना आप बनोगे। You know, they always say I can get, you know, you can be out of army but army will never be out of you, right? आपकी बात करने का तरीका, आपके सारा जिंदगी जो आप घुस गए, तो फिर वो फौज ही फौज है। जिस भी यू नो, चाहे आप एयरफोर्स में जाते हो, देन इट्स मिलिट्री। आई फील दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड आई थिंक ट्रस्ट और ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जो है, ये तो आपका बेसिक इंग्रेडिएंट है। अदरवाइज यू नो आई थिंक एनीबडी विल बी अ बिग मिसफिट। उसको तो जाना नहीं चाहिए। यू वन इज, इट्स नॉट अबाउट अ शॉक, इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, यू गेट ऑल द टेंशन, right? And you know, it's a very different decision, and tough decision, but I think it's worth. There's no life other than there is a sense of achievement what you've done, and कोई बंदा ऐसी stories corporate world में नहीं बता सकता. I can tell you that. I have seen people in doing very well in 35, 40 years in business, but they have nothing to tell. क्या बात कर सकते हैं सिर्फ एक पैसे की और बिजनेस की? They have nothing to tell. They cannot say, मैंने, you know, I faced a bullet. They cannot say, you know, I saw a terrorist. They cannot say, you know, मैंने near death situation देखी, right? I think, and what we can do is that आज भी the colonel remains with you. You are never Mr. Okay, I think इसको, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, तो चाहे वो यू नो अंबानी हो, वो पैसे देके बिलियंस ऑफ डॉलर देके साथ अपने, वो रहेगा मिस्टर। ओके, वो जिंदगी में कभी सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जिंदगी भर चलता है। यहाँ पे भी लोग आपको कर्नल साहब बोल के एड्रेस करते हैं। ओके, यू फील वेरी प्राउड। ओके, दैट नोबडी टॉक्स यू, टेल्स यू। इवन यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हाफ द पीपल एड्रेस मी एज हेलो कर्नल। ओके, ये कहीं नहीं मिल सकता, and I think that's the best achievement I have. It's a best income, it's a best asset. If one wants that type of asset, I think there's nothing better to be, and that to be part of Indian Defense Forces, which are best trained. I can tell you, लोग अमेरिकन आर्मी मूवीज में, हॉलीवुड देख के इम्प्रेस होते हैं, पर इन रियल they will realize that they are 1,000 times better being an Indian Army officer. जो रिस्पेक्ट मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। Thank you very much, sir, for coming on our platform. And on behalf of all the followers, all the subscribers, I would like to thank you for your service. And we are indeed grateful that we had people like you motivating us, helping us, guiding us. So thank you very much, sir. No, thank you, Simran. I have to thank everybody who will watch this. You know, it's always a pleasure. There's nothing like it to go back to your nostalgic memories and relive them.
I relived, I enjoyed. I think I have gained more oxygen than anybody else will be. Recollecting Yes, those. Okay, thank you. Jai Hind. would like to request all the people watching this. You can follow you can follow Colonel Rupinder sir. His Instagram ID is in the description and in the pinned comment section. Also, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much. Stay safe. Jai Hind.